Yeah, good morning, student. We will wait for 2 to 3 minutes, fine. Yet more student to join, then we will start it. Yeah. Just write down the problem statement. In the last lecture, we have seen the example related to the closure property. Hmm? I will give one problem, solve it, and tomorrow we will cross-check with the solutions. So write down the problem statement. This one is related to the closure property. It may have more than one final state. So we will start it. The first machine, and that is M1. What the language it say? The language it say that design the DFA for input A and B, and accept only those string and accept only those strings which ends up, this one is the example, we have seen it, fine, which ends up in either AA or BB, fine. So here we having a two final state for a machine M1, fine, and next one for a machine M2. Design a DFA for a string input string that is A and B, containing both AB and BA as a substring. This one is also example we have seen. Here it comes only one final state. Is that clear? Fine. So design a finite automata for a closure property that is the language of machine M1 union the language of machine M2. Same closure property, fine. The language of machine M1 intersects the language of machine M2, and last one is the difference, that is the language of machine M1 which differs from the language of machine M2, fine. Just solve it at home, and tomorrow we will cross check it with the final closure property output. Is that clear? Fine. Third year student, machine M1, that is which having or which ends with either in A or BB, fine.
fine. Here we are having a two final state, and the next machine is a substring which contains AB and DA. So here it have only one final state. So we will start it with a new bit, and the new bit is related to the minimization of a DFA. Fine. So how basically you can minimize a states. Right? Say a simple example. I will just write down the bit that is minimization of a DFA. So here we will just minimize the state. Say suppose I having a state in a transition diagram. Say suppose Q0, Q1, next will be a Q2, Q3, Q4. Say it is been interconnected with each other by any inputs, but just assume it that. So here when I say that I having a transition diagram with a state that is Q0, Q1, Q2, Q3, sorry, here it will be Q3, right? Q3 and Q4. So total we having 5 states, and how I can minimize this state. No? So the output I want to achieve through the minimization is that within a less state, how basically I can design a finite automata. तो ऐसे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे भाई अभी आपके 5 स्टेट्स है, तो 5 स्टेट इट माइट बी रिड्यूस टू 4, 3, 2, फाइन. सो अगर एक भी स्टेट आपका अगर रिड्यूस होता होगा, सो डेफिनेटली it achieves less time, बरोबर, to process all the inputs into a transition diagram. So यहाँ पे अभी हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ मिनिमाइज करना है DFA, बरोबर, कितने भी स्टेट्स रहने दो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट द फाइनल आउटपुट और व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर बिट इज नथिंग बट आई हैव टू reduce a finite automata. It may be by a 1 state, 2 state, or it doesn't matter, but we will try to minimize a DFA. Fine. So I will explain one example how to minimize a DFA, bro, through the steps only, and next example I will give it to you to solve it. So write down the next example. Design a finite automata. Design a finite automata here. I will design a finite automata in such a way that it reduces its state. Design a FA in such a way that it reduces its state तो इसको हम बोलेंगे मिनिमाइजेशन ऑल्सो, बरोबर. कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स घुमा फिरा के भी देते, और डायरेक्टली दे से दैट डिजाइन a FA to minimize the states. Fine. This will be also a question. Okay, write down the problem. We will start it with a simple example, बरोबर. सिंपल एग्जाम्पल हम देखेंगे, it will be better to understand.
So the FA is in Q0 I am going to process A, it reached to a final state, that is to a state Q1, it will process B, it reached to a state that is to a Q3, here it will process A and B. Next in Q1 state it will process B, it reached to Q2 state, and here it process also A also same, and here it will be processing A and B. So here remember that from Q1 we are having the input A and B towards Q2 state only. So here we are having total 4 state, and how we can minimize these particular states, right? So we will start it with a solution, right? What the first step it says, right? The first step is related to the zero equivalence. The first step, it is related to a zero equivalence, right? So what the zero equivalence it means? Zero equivalence. So what the zero equivalence it means? In this zero equivalence, fine, you are going to bifurcate the final state and the non-final state. What I'm saying, you are going to bifurcate the final state and a non-final state in a zero equivalence. So simply in a zero equivalence, fine, here separate a final and non-final states. Separate a final and non-final state. तर या zero equivalence मध्ये तुम्ही जर चेक केलं, I can say की sir Q0 and Q3 there will be a one set which is of a non-final state, और sir और एक set आएगा, fine, क्यों यहाँ पे अभी 2 final state है. So here it will be a Q1 and Q2. These are the two state which comes under a category of a final. So what the zero equivalence it means? In step 1 we are going to bifurcate the final state as well as a non-final state. Fine. Now we will go for the step number 2, that is one equivalence. So ऐसे equivalence है, zero equivalence, one equivalence, two equivalence, three equivalence. Fine. It will go on जब तक कि same आता नहीं है. बरोबर. Step number 2 it deals with one equivalence. बरोबर. In one equivalence we are going to check the previous steps, that is, or we can check for a zero equivalence. बरोबर. तो zero equivalence में क्या था भाई कि यहाँ पे final state और non final state हमने bifurcate किया. बरोबर. अभी one equivalence में we have to go for these block or we have to go for these set. बरोबर. अभी Q0 ये सिर्फ एक ही लेंगे हम. Q0 now check for a Q0 by processing A. बरोबर. In which state basically it may enter or it may reach. By processing B, in which state basically it may enter. तो यहाँ पे हमको देखना है कि भाई कौन से स्टेट में ये यहाँ पे पास होगा. बरोबर. So if you go through Q0 state, बरोबर, Q0 में A प्रोसेस करने के बाद मैं Q1 स्टेट में जाऊंगा. बरोबर. And here the Q1 set is completely a final set. ये different है. बरोबर. वन इक्विवेलेंस में हमको चेक क्या करना है कि भाई Q0 in Q0 state if I process A and B and if it reach to the same state it may be in a Q0 or Q3 तो मैं वही स्टेट में उसको रखूंगा. Are you getting? Simple statement है what I am saying. In a Q0 state I am going to check the processing of A and B. बरोबर. जो भी इनपुट प्रोसेस हो रहा है मैं वहां पे चेक करूंगा. What I am going to check कि भाई Q0 में जीरो प्रोसेस करने के बाद वो कौन से स्टेट में जाएगा. कौन से स्टेट में मतलब अभी यहाँ पे
सेट डिफरेंट है, यहाँ पे एक सेट है कि जो नॉन फाइनल सेट है और दूसरा जो सेट है ये फाइनल सेट है, बरोबर। अभी Q0 में ए प्रोसेस करने के बाद वो फाइनल सेट में जा रहा है, बरोबर। जस्ट गो थ्रू द डायग्राम। Q0 में ए प्रोसेस करने के बाद ये फाइनल सेट में जा रहा है, ये दूसरे सेट में जा रहा है। और Q0 में बी प्रोसेस करने के बाद वो Q3 सेट में, मतलब वो सेम ही सेट में रह रहा है। Are you getting? So here we say that the Q0, it does not belongs to a one equivalence, it may differ. Why it may differ? Because ए प्रोसेस करने के बाद वो एक दूसरे सेट में जा रहा है, दैट इज ऑफ ए फाइनल सेट, और बी प्रोसेस करने के बाद वो नॉन फाइनल सेट में जा रहा है, बरोबर। तो ये वन इक्विवेलेंस है, इट्स डिफरिंग, बरोबर। तो यहाँ पे Q0 ये सेपरेट रहेगा, बरोबर। नेक्स्ट वन Q3. Why? Because Q3 it may have a separate, क्योंकि Q0 में ही वो A प्रोसेस करने के बाद फाइनल स्टेट में जा रहा है और B प्रोसेस करने के बाद नॉन फाइनल स्टेट में, और Q3 if you go through by processing A and B, Q3 में it remains into the same state. तो Q3 का क्या है कि A और B प्रोसेस करने के बाद वो सेम सेट में रह रहा है, so that will be a bifurcate in a equivalence or in a one equivalence. और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट स्टेट Q1 and Q2. Check for Q1 and Q2. What I'm saying, check for Q1 and Q2 also. If you go through the Q1 and Q2 transitions, what it say? Q1 में मैं A और B प्रोसेस करने के बाद मैं फाइनल स्टेट में जा रहा हूँ। फाइनल स्टेट में जा रहा है मतलब कौन से स्टेट में जा रहा हूँ? In a Q2 state. And where the Q2 state it resides into this block only. ये यही ब्लॉक में है। Q1 में A और B प्रोसेस करने के बाद मैं Q2 स्टेट में जा रहा हूँ, मतलब वही सेट में जा रहा हूँ। एंड इफ आई गो थ्रू द ट्रांजिशन ऑफ Q2 ऑल्सो, Q2 में भी क्या है भाई कि A और B प्रोसेस करने के बाद मैं वही स्टेट में रह रहा हूँ, और वही सेट में रह रहा हूँ मतलब क्या रह रहा हूँ मैं? ये फाइनल सेट में रह रहा हूँ। सो हियर इन द वन इक्विवेलेंस वी have these set as a same only. Are you getting? समझ में आ रहा है? वन इक्विवेलेंस डिपेंडिंग अपॉन अ जीरो इक्विवेलेंस ये सेपरेट हो चुका है। वो why basically the Q0 and Q3 it is separated? Because in a Q0 state, by processing A it reached to a final state, and by processing B it reached to a non-final state, बरोबर। तो ये दोनों सेपरेट सेट को असाइन कर रहा है, बरोबर। So that's why we have separated the Q0 and Q3. Definitely by processing A and B, it remains into the same state only, that is Q3. Next, step number 2. So step number 2 is all about the true equivalence. So true equivalence में हम check करेंगे भाई by processing, और we go for a Q0 state. Q0 में A और B प्रोसेस करने के बाद वो एक फाइनल सेट में जा रहा है और एक नॉन फाइनल सेट में जा रहा है। मींस हियर इट मे हैव अ सेपरेट सेट Q0, Q3. इफ यू गो थ्रू द Q3 by processing A and B, it remains into the same state, and for Q1 and Q2 it will be there into a final set only, or I can say a same set only. तो यहाँ पे अभी कितने सेट क्रिएट हो गए? 3 sets. So we will stop here only. What is the reason to stop here? Because one equivalence, अभी हम two equivalence जब भी हम finite automata का निकालेंगे, at that time we check for the one equivalence. So one equivalence का output और two equivalence का output same ही आ रहा है, बरोबर। So we will stop here only and we will draw a minimization DFA. So how basically you are going to draw in a Q0? तो अभी यहाँ पे हमारे states कितने आए? हमारे 3 states आए, Q0, Q3, Q1 and Q2. So I will draw here Q0, Q3, and the one complete state which is a final state of both the state, that is Q1 and Q2. तो Q0 में A प्रोसेस करने के बाद मैं फाइनल स्टेट ये सेट में जा रहा हूं, दैट इज इन अ Q1, बरोबर। नेक्स्ट B, इफ आई प्रोसेस B, I reach to a state that is Q3. In Q3 by processing A and B it remains into a same state, और Q1 Q2 मध्ये A आणि B प्रोसेस केल्यानंतर तो त्या सेम स्टेट मध्येच राहतो, बरोबर। आता तुम्ही म्हणत असेल की सर जर Q3
Q3 मध्ये जर आपण A आणि B प्रोसेस करून सेम स्टेटलाच आहे, बरोबर. Here by processing A and B, it remains into a same state only. Say suppose for a while in Q3, if I process a B, in Q3 if I process a B and it reach to any one of a final state, it may reach to a Q1 state, it may reach to a Q2 state. कोणते भी स्टेट में वो जाने दो, बरोबर. Q3 मध्ये जर मी B प्रोसेस केलं आणि तो Q1 आणि Q2 कुठल्याही स्टेट पैकी एखाद्या स्टेट मध्ये तो जर रीच झालं, so how the minimization it comes, the minimization it comes all about Q1 and Q3 मैं क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा. तो यहां पे अगर सिर्फ Q3 में A और B, if it reach to any one of the final state, it may be the Q1 or Q2, I will combine the Q0 and Q3 state. Remember, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर फाइनल मिनिमाइजेशन में क्या आएगा, सिर्फ दो ही स्टेट आएंगे. एक स्टेट आएगा Q0 और Q3 का, एक स्टेट आएगा Q1 और Q2 का. Is that clear? 0 equivalence, 1 equivalence, 2 equivalence, fine. You go on executing or expanding the steps depending upon the previous equivalence or depending upon the previous steps. And what the basic step is, that the basic step is you are going to check for the first 0 equivalence, final, non-final, and in the step number 1 you are going to check for the states, that is Q0 में अगर मैं A और B प्रोसेस करूंगा, whether it remains or whether it resides into a same set or it reach to a different set. अगर वो different set में जा रहा होगा, so definitely you are going to bifurcate it. Is that clear? Third year student, इसमें किसी को problem है? Next problem, you solve it, right? And tell me the answer. What will be the output? Right? एक छोटा सा एक सिंपल एक एग्जांपल देतो, त्यानंतर या ह्याचं मला आउटपुट सांगा, बरोबर. इज दॅट क्लिअर थर्ड इयर स्टुडंट? यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे मिनिमायझेशन ऑफ डीएफए मध्ये? नेक्स्ट प्रॉब्लेम, minimize a DFA, minimize a DFA by using by using a following ट्रान्झिशन टेबल. बरोबर, कधी कधी ते टेबल देतात, कधी कधी ते डायग्राम्स पण देतात. फाइन. सो नाउ यू आर गोइंग टू मिनिमाइज अ डीएफए depending upon the transition table. Fine. So here in that state you are going to process the input 0 and 1. Q0 it's your initial state. Fine. Q0, Q1, next one Q2. Q2 I have defined a final state that is to be represented by the star. Q3, Q4, Q5 again I have represented star. Q6, Q7, and lastly Q8. Again final state. So here in this table totally we having a 3 final state. बरोबर. इसला मी थोडं छोटं करतो. So here in Q0 by processing okay, so here in Q0 by processing 0 it reached to a state that is to a
Q1, and by 1 it reached to a state that is 2 Q4. Q1 मध्ये Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, and lastly Q0. Lastly Q0. Next, Q1 by processing 1, it reached to a state that is Q5, Q7, Q7. Next one, Q8, Q1, Q1, Q2 and Q4. ट्राय करा. बरोबर, हा स्टेट आहे Q8. बरोबर. If it is not visible, I will redefine it. Q8. Right? So totally we having 8 states from Q0 to Q8, bro, by processing 0 and 1. So just solve this example and tell me what will be the minimized DFA for this particular transition table. You have to go through the stepwise, fine, for a 0 equivalence, 1 equivalence, and in each and every step or the equivalence, you are going to create a set of the states आणि चेक करा की 0 आणि 1 प्रोसेस केल्यानंतर तो दुसऱ्या सेट मध्ये जातो का. बरोबर, जर जात असेल तर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बायफर्केट. ऍटलीस्ट ट्राय इट. बरोबर, सोल्युशन तर मी तुम्हाला लास्टला सांगतो, पण तुम्ही ट्राय करा. Yeah, anyone solve the step number 0, that is a 0 equivalence. Yeah, who is going to tell me? Abhijit Zadu, you tell me. What will be the step number 1, or what will be the output for a 0 equivalence? Abhijit Zadu. Are you there or not, Abhijit Zadu? Yes, sir. एवढा वेळ का लागला रे बाबा तुला? Sir, first we'll separate them into final and non-final states. So tell me the output. Fine, complete output you tell me की काय येईल. Sir, total नाही झालं अजून.
का बरं काय करतोय मग आता फायनल आणि नॉन फायनलला एवढं वेळ लावलं का? या चेतना थोरात. Yes, sir. या यू टेल मी आउटपुट काय येईल सांग मला. काय येईल आउटपुट? बरोबर. आता झिरो इक्वॅलन्स बघा बरं का. तर झिरो इक्वॅलन्स मध्ये आपण काय करणार आहे, फायनल आणि नॉन फायनल स्टेट हे सेपरेट करणार आहे. बरोबर. तर आता फायनल स्टेट कुठले कुठले आहेत, Q2, Q5 आणि Q8. का तर यामध्ये स्टार रिप्रेझेंट केलेलं आहे बरोबर टेबलमध्ये. सो द स्टेप नंबर 1 इज रिलेटेड टू अ झिरो equivalence, and what the zero equivalence is that to separate a non-final state and a final state. Simple concept. Non-final state and final state. बरोबर. तर ते यामध्ये दोन सेट्स येतील झिरो इक्विव्हॅलन्स मध्ये. तर फर्स्ट जो सेट येईल तो फर्स्ट सेट येईल तुमचा Q0, Q1, Q3, Q4, Q6, Q7 आणि आणखीन एक सेट येईल फायनल सेट दॅट इज Q2, Q5 and Q8. हा प्रॉब्लेम यामध्ये बरोबर. नेक्स्ट स्टेप नंबर 1. आता स्टेप नंबर 1 मध्ये आपण चेक करणार बरोबर की 0 आणि 1 प्रत्येक स्टेट मध्ये प्रोसेस केल्यानंतर तो कुठल्या कुठल्या स्टेट मध्ये जातो. फाईन. तर सिंपल आपण ट्रान्झिशन्स थ्रू बघूया बरोबर. ट्रान्झिशन्स थ्रू मग तुमच्या लक्षात येईल की यार थोडं सिंपल झालेलं आहे बरोबर. आता से सपोज ट्रान्झिशन्स थ्रू बघूया. ट्रान्झिशन ऑफ Q0 0 बरोबर. Q0 मध्ये जर मी 0 प्रोसेस केलं बरोबर तर तो कुठल्या स्टेटला जातो, तो जातो Q1 स्टेटला बरोबर. Q1 इट इज देअर इन दिस सेम सेट ओनली बरोबर आहे ना. Q1 हा त्याच सेट मध्ये आहे. नेक्स्ट transition of Q0 when I process 1 it reached to a state that is to a Q4. Check for the Q4. Q4 is also resides into a same block only or ह्याला आपण block 1 देऊया, ह्याला आपण block 2 देऊया. It resides into a block B1. काय प्रॉब्लेम यामध्ये Q0 साठी बरोबर. नेक्स्ट आपण Q1 घेऊया. Q1 by processing 0. When I process a 0 in Q1 कुठल्या स्टेट मध्ये जातो तो चिन्मय. इन विच स्टेट बेसिकली इट रिच. या Q1 मध्ये जर मी 0 प्रोसेस केलं तर तो कुठल्या स्टेट मध्ये जातो. Q2 sir. Q2. Good, fine. It goes into a Q2 state. Same as Q1 when I process 1 it reach to a Q5 state. प्रत्येक ह्याला आपण चेक करूया म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात तरी येईल. नेक्स्ट इन Q3 when I process 0 it reach to a Q4 state and when I process 1 it reach to a Q7 state. Next go for Q4 state. When I process 0 it reach to Q5 state and when I process 1 it reach to Q8 state. Next Q6 when I process 0 it reach to Q7 state and when I process 1 it reach to Q1 state. Q7 when I process 0 Q8 state and when I process 1 it reach to Q2 state. सिंपल आहे बरोबर. Q1 इक्विव्हॅलन्स मध्ये काय केलं की बाबा जे मागच्या एक्झाम्पल मध्ये मी डायरेक्टली आन्सर दिलं तर बरोबर काय चेक करायची गरज नाही. ते ट्रान्झिशन डायग्राम थ्रूच तुम्हाला इझिली कळून जाईल बरोबर. आता यामध्ये थोडं मी सिंपल केलं की परत थोडं डेप्थ मध्ये गेलो. एवढं ट्रान्झिशन्स लिहायची काहीच गरज नाही बरोबर आहे ना. पण तुम्हाला सिम्प्लिसिटीसाठी मी तो दाखवलेला आहे की यामध्ये आता तुम्ही चेक करायचं. इफ आय गो थ्रू द Q0 state in that I have processed 0 and 1
0 आणि 1 प्रोसेस केल्यानंतर तो Q1 and Q4 स्टेटला जातो. Q1 and Q4. But these states is resides into a same state only. बरोबर. What about Q1? Q1 when I process 0 and 1, it goes to a final state Q2 and Q5. Remembering this one, so I will make it as a star to this state. Why? Because it is not resides into a block 1, it resides into a block 2. Are you getting? When I process 0 and 1 in Q1 state, go through the Q3 state. Q3 स्टेट मध्ये मी जर 0 आणि 1 प्रोसेस केलं, इट रिसाइड्स इनटू अ ब्लॉक 1, that is Q4 and Q7. It is already there into a block 1. Next go for Q4 state. Q4 state मध्ये 0 आणि 1 प्रोसेस केलं, it goes to a final state. Both the input for 0 and 1, it goes to a block 2. बरोबर. So I will mark this state as a star. Go for the Q6 state. Fine. What the Q6 state? When I process 0 and 1, it reached to Q7 and Q1. And Q7, Q1, they are both in a block B1. Next, go for the Q7 state. In Q7 state, when I process 0 and 1, for both this input, it reached to a block B2. That is Q8 and Q2. So what I will do, I will mark... I will mark these state as a star. तो अभी आपको पता चला कि भाई इतने में से ब्लॉक B1 में से मैंने हर एक स्टेट में 0 and 1 प्रोसेस किया, हर एक स्टेट में ब्लॉक B1 में से, एंड आई कैन इजीली bifurcate that it by processing 0 and 1 in which block basically they reside. Either they reside into a same block, that is B1, or either they reach to a block that is to a B2. तो अभी मुझे बताना यहाँ पे कौन सा स्टेट bifurcate होगा, या थर्ड ईयर स्टूडेंट कौन से स्टेट्स बायफर्गेट होंगे मुझे बताना यहाँ पे. Sir, Q0, Q3 and Q6. Q0, good, fine. So here it will basically bifurcate for Q0, Q3 and Q6. So this one consider now as a block B1. Next एक रहेगा सेट आपका Q1, Q4, Q7, consider it as a block B2, and last आपका completely final state रहेगा, that is Q2, Q5 and Q8. This will be your block B3. Are you getting? Next go for the equivalence, two equivalence. So step number 2. Step number 2, two equivalence. टू इक्विवेलेंस. अभी मैंने पहले ही बताया कि भाई टू इक्विवेलेंस निकालने के लिए आपको वन इक्विवेलेंस की तरफ देखना पड़ेगा कि वन इक्विवेलेंस का आउटपुट क्या है. तो वन इक्विवेलेंस का आउटपुट है एक ब्लॉक B1, B2, B3 है. ब्लॉक B1 मध्ये चेक करा Q0, Q3, Q6. ब्लॉक B1, in that we having Q0, Q3 and Q6. अभी मैं Q0 को ले लेता हूं. Q0 मध्ये चेक करा. Q0 मध्ये जर मी 0 आणि 1 प्रोसेस केलं तर तो कुठल्या स्टेट मध्ये जात होता, तो एक Q1 and Q4. Q1 and Q4, it is represent to a block B2. Are you getting? It is represent to a block B2. तो मैंने यहाँ पे Q0 त्या पर्टिक्युलर सेट मध्ये पुटअप केला. नेक्स्ट आता B1 मधला Q3 घ्या. Q3 चेक करा की Q3 मध्ये Q4 and Q7 येत होता, तर Q4 आणि Q7 पण तो ब्लॉक B2 मध्येच आहे. नेक्स्ट Q6 घ्या. Q6 मध्ये येतो Q7 and Q1. Again Q7 and Q1, it is there into a block B2. Means what I want to say, if I process 0 and 1 in Q0, in Q3 and in Q6, they are going to reside their output in block B2 only. It may be in Q1, Q4 और Q7, पर वो वही ब्लॉक में जा रहा है, B2 ब्लॉक में जा रहा है. वो कोई भाई दूसरे ब्लॉक में जा रहा है क्या, B3 ब्लॉक में जा रहा है क्या? इफ इट रिचेस वन ऑफ द स्टेट टू अ B3 ब्लॉक, तो मैं क्या करूंगा, फिर ये Q0, Q3, Q6 को मैं फिर से बायफर्गेट करूंगा. क्यों बायफर्गेट करूंगा? क्यों भाई इसका एक इनपुट वो B3 की तरफ मूव हो रहा है और रिसाइड हो रहा है और रिच हो रहा है.
But here in this case, Q0, Q3, Q6, they all output for 0 and 1. It resides into a B2 block only. And next go for a this will I will represent as a B1 block. अभी B2 block देखना Q1, Q4, Q7. अगर मैं Q1, Q4, Q7 की तरफ देखूंगा तो वो completely उसका ट्रांजिशन फॉर 0 and 1 वो B3 ब्लॉक की तरफ ही रिसाइड हो रहा है, बरोबर. इट रीच टू एनी वन ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम अ B3. गो फॉर B1 मध्ये जर मी Q1 मध्ये जर मी 0 आणि 1 प्रोसेस केलं तर तो Q2 आणि Q5 ला रिच होतो. तर Q2 आणि Q5 हा रिप्रेझेंट करतो B3 ब्लॉकला. Q4 घ्या, Q4 मध्ये 0 आणि 1 जर मी प्रोसेस केला तर तो Q5 आणि Q8 स्टेटला जातो. तो अगेन इट रिप्रेझेंट्स फॉर अ B3 ब्लॉक. मीन्स हियर व्हॉट आय वॉन्ट टू से, फॉर these three states Q1, Q4, Q7, they having or they reach to the same block only. So I will represent this as a B2. And lastly ये तो आपका final state ही रहेगा, बरोबर. इसमें तो कुछ change नहीं रहेगा. So I can conclude that the one equivalence and the two equivalence output is same. So आपका final अभी minimization DFA कैसे रहेगा? Just only by representing a 3 states. So here I will have one state which goes for Q0, Q3, Q6. Next state is Q1, Q4 and Q7. And last one is your Q2, Q5 and Q8. तो ये आपका इनिशियल स्टेट रहेगा, बरोबर. Q0, Q3, Q6 ये इनिशियल स्टेट रहेगा और डेफिनेटली ये कंप्लीट सेट आपका एक फाइनल सेट रहेगा. सो आई कैन से दैट, व्हाट आई कैन से दैट, in Q0, Q3, Q6, by processing 0 and 1, I reach to Q1, Q4, Q7. बरोबर. Same as by processing 0, by processing 0 in Q1, Q4, Q7, it reached to a final state. For 0 as well as for 1. बरोबर. 0 और 1 के लिए वो फाइनल स्टेट में जा रहा है, बरोबर. एंड इन फाइनल स्टेट Q2, Q5, Q8, if you go through, by processing 0, it reached to Q0, Q3, Q6, and by processing 1, it reached to Q1, Q4 and Q7. So from this totally a 9 state, बरोबर. 9 state कहाँ से, Q0 से Q8 तक we have minimized just only through a 3 state. अभी आप बोलेंगे कि सर अभी ये कहाँ पे यूज होता है? Why? Because it is all about a compiler. It is all about a compiler. Fine. So compiler, to design a compiler, we require a basic concept of theory of computation. तो यहाँ पे for each and every statement, they draw a finite automata. It may be a deterministic, it may be a non-deterministic. तो सर ये अभी combine कहाँ पे होगा? Fine. So combine, if you are having the expression that is A is equal to B plus C multiply by B plus C. Again say suppose plus B plus C. So what it means? It means that in the parenthesis you having the same variable, and what you are going to have, you are just going to add B plus C, B plus C, B plus C. It is represented 3 times. तो यहाँ पे क्या होगा? कंबाइन होगा, कंबाइन होके एक ही रहेगा आपका B plus C. Are you getting? क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू रहेगा B plus C का, से सपोज B का मेरे पास वैल्यू है 5 और C का मेरे पास वैल्यू है 6. But here in this second parenthesis also it represents the same, that is 5 and 6. Here also 5 and 6. बरो. तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये कॉमन सब एक्सप्रेशन में जाके डैग क्रिएट होगा आपका, दैट इज अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. बरोबर. इफ यू, आई थिंक सो, अगर डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा तो यू कम टू नो कि इसका क्या होगा कि B plus C, it will have a common sub expression elimination and then it will going to draw a tag, that is a directed acyclic graph. और इसमें ऑपरेटर जो है, ये ऑपरेटर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फाइन. सिंपली दैट इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू असाइन अ आउटपुट टू A. फाइन. फर्स्ट it will basically process a plus. बरोबर. तो इसके आपके पहले क्या होगा? For plus it will basically define a multiplication. Are you getting? तो प्लस है. फाइन. नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन.
and for this multiplication it will going to process B and C, means B plus C. So first operation it will going to process for this parenthesis, and next whatever the output it will come, it will going to combine it with B plus C. Are you getting? So here if you are having the expression in a program in this way, so definitely it will going to minimize the states for a complete expression at last. For the code optimization, what I'm saying, for the code optimization, it will definitely minimize the states. Is that clear? Next example तुम्ही solve करता, third year student. Try it, बरोबर, try करा आणि चेक करा की आउटपुट काय येईल. ह्याचा आपण नेक्स्ट ह्याला आपण त्याचा आउटपुट बघूया की काय येईल. जस्ट ट्राय these two examples. First one is the example which is related to the minimization, बरोबर, and next one is a closure property. हे दोन examples तुम्ही घरी सॉल्व करा, closure properties आणि minimization चा. हा example consider करा. फाइन. minimize or obtain or construct, बरोबर, minimize a DFA having 0 1. Fine. The initial state is your Q0, Q1, Q0, next one Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Here process Q1, Q0, यहाँ पे आएगा आपका Q0, Q2, यहाँ पे आएगा Q3, Q1, next again Q3, Q0, Q3, Q5, Q6, Q4, next one Q5, again Q6, and the last one is Q6, Q3, Q6, Q3. Fine. So here I having only one final state, that is a Q3 or initial state Q0. लिहून घ्या, ट्राय करा क्लोजर प्रॉपर्टी आणि हा एक एक्झाम्पल मिनिमायझेशन ऑफ DFA, आणि उद्याच्या लेक्चरला आपण ह्याचं सोल्युशन बघूया. फाइन. कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे आजच्या लेक्चर मध्ये, थर्ड इयर स्टुडंट? Okay, give me present number. Fine. Roll number 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. Present, 4. sir. 5. तुम्ही लिहून घेतलं का रे ते प्रॉब्लेम? Yes, sir. प्रॉब्लेम लिहून घ्या बघा. ठीक आहे. 5, 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. 10. Present, sir. 11. 11 present, sir. 12. 13. Present, sir. 14. 15. Present, sir. 16. Present, sir. 17. 18. 19. Present, sir. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 22. 23. Present, sir. 24. 24. 25. Present, sir. 26. Present, sir. 27. 27. 28. Present, sir. 29. Present, sir.
30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, 44, 45, 45, 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, 49, 50, Present, sir. 51, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Present, sir. 60, 61, Present, sir. Present, sir. 62, 62, 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, 66, 67, Present, sir. 68, sir. 69, sir. 70, Present, sir. 71, 72, 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, Present, sir. 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, 79, 80, Present, sir. 81, 82, sir. 82. Okay, today we'll stop here only. Sir, कुणाला काय 17 problem is आहे? also present.